गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 27th ऑफ मे, 57th डे ऑफ 90 डेज नॉकआउट। गोइंग वेल सो फार। जस्ट डिड द मेडिटेशन। बहुत दिनों से मॉर्निंग मेडिटेशन नहीं हो रही थी, केवल मैं इवनिंग में मेडिटेशन कर रहा था, विच वॉज अफेक्टिंग मी इन अ बिग वे। मैं कोई आइटनरी नहीं बना पा रहा था, एजेंडा नहीं प्लान कर पा रहा था कि हाउ द होल डे हैज़ टू गो, और जो चीज़ जैसे जैसे आती जा रही थी वैसे वैसे आई वॉज एबल टू डू इट। व्हेन आई स्टार्टेड दिस 90 days challenge, फ्रॉम द स्टार्ट itself आई न्यू what was supposed to happen, but अगर something was coming in between, I used to do that in the first place. There was no priority to any specific task. It's just that I have to complete all the tasks. That's how I was going about it. But from today what I'm thinking is सुबह की morning meditation करके I'll plan out things and write what thoughts came to my mind when I was meditating. Once I have able to do complete all these things, come back from the first thing that I do every day is workout. Once I'm back from workout, I'll have all the meals and all, and then go for running. Once I'm back from running, I'll do the meditation and then sit for office and do the rest of the part, which is coding, working, completing the pending tasks in office. All in all, if you want to make a day productive, you will have to plan things out, and that should be the first thing that you do in the day, early in the day, so that you know what all things are supposed to be done, completed, and that's how you can implement it. Or probably what you can do is write down the timing for when to do all those tasks. That will make more sense as you go ahead in the day, and when you see the watch, you know what time it is and what task needs to be done. अभी हम अपनी मील फिनिश करेंगे, and this is the first meal that I have every day, which will have oats, little bit of milk, protein, lots of fiber from fruits. So that's what I have on a daily basis, and what I think is this gives me a lot of energy to perform all the tasks in the day, last a little bit longer. अगर आप कोई पराठे वराठे खाते हो थोड़ा सा आपको लेजी कर सकता है, that's also carbs, but again these are good carbs that you can have. That's about it. I'll head to the gym now and I'll see you right there. Back at the gym, we'll do some stretching. And the one thing that I want to tell you guys is, yes, it looks a lot easier कि जिम डेली जाना है, रनिंग डेली करनी है, बोलने में बहुत आसान लगता है, वो इतना आसान नहीं है। आपको थोड़ी थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी कि ताकि आप उस हैबिट में आ पाओ कि आप डेली इस चीज़ को रूटीन में डाल पाओ, जिम को, रनिंग को, लर्निंग को, अर्निंग को, वर्क को। So that takes time, and that is what 90 days knockout is all about. जैसे कई लोगों के लिए जिम और रनिंग हो सकती है, वैसे मेरे लिए भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ टू गेट बेटर एट इट. वन ऑफ द थिंग इज़ सिंगल लेग स्क्वाट्स. सो अगर मुझे ऐसे स्क्वाट मारना है तो मैं बिना सपोर्ट के नहीं कर पाता हूँ. सो व्हाट आई डू इज़ I take assistant. So मैं बैंड का असिस्टेंट लेके सिंगल लेग स्क्वाट करता हूँ, बिकॉज मेरे लिए जस्ट लाइक रनिंग एंड वर्किंग आउट डेली फॉर यू इज सिंगल लेग स्क्वाट इज फॉर मी. Everything demands a lot of consistency, a lot of patience, a lot of practice. Nothing is easy, nothing comes for free. It all depends on how much time you are spending to get that thing done, and that's how it gets simple. We'll get back to the main workout. Let's go.
5 minutes 57, one lap. Day 1, preparing for the Hyrox circuit. It's not easy at all. What we are doing is 500 meter of rowing, then 30 air squats, then we are doing lunges with dumbbells, and then 15 burpees. Again, we have to do this for 3 sets. It's a killer workout. I don't know, because the main Hyrox workout is 10 times more complicated than what we are doing here. Usually the reason why we are doing it is to get into the practice of more of circuit training, and let's see how we can cope up to the Hyrox level. Let's go. 90 minutes of core workout, nothing like it. The best circuit training. Let's check the flex. A lot of such trainings, it's definitely going to create a major impact. 4:30 हो रहे हैं, रनिंग के लिए रेडी हो रहे हैं. 1 घंटा दौड़ेंगे, then we'll come back for work. Wearing these after a long time. Shoes do matter. In case you need any help to select a shoe for running, let me know. Let's go for the run. 1 kilometer into the run. गर्मी बहुत है, जिसकी वजह से हार्ट रेट काफ़ी हाई है, and we'll be completing like 10 kilometers today. Let's go. Seven kilometers into the run. Amazing feeling, amazing sun. Let's go. Good work. Completed. Just maintain the consistency. That's all what I mean to say when I'm showing you this video. Let's go. By every run, you just get closer to the best version of yourself, because you are practicing more of what you want to do, of what you want to compete in, or probably you love to do. Can be anything. So yeah, I'll see you back at home. गुड इवनिंग एवरीवन. 22:59, 11 बजने वाले हैं. सारी मील्स खा पी ली, ऑफिस का काम कर लिया, रनिंग कंप्लीट हो गई. आज का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव था. जिम में हाइरॉक्स ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है. जिम का जो सेशन था दैट वाज मोर देन 90 मिनट्स, एंड देन वी डिड रनिंग एज वेल फॉर अराउंड 1 hour 20 minutes, 10 kilometers. So all in all, workout part was good. Protein intake was also good. We had lots of paneer today. We had protein shake, watermelon, oatmeal. All in all, हर चीज़ आपको क्लब करके खानी पड़ेगी. प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स एंड मल्टीविटामिन. ऑल दोज थिंग्स आपको सब चीज़ रखनी पड़ेगी इफ़ इन केस यू वांट योर हेल्थ एट द टॉप लेवल. कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है कि केवल नॉर्मल खाना खाने से सब कुछ हो जाएगा, बिकॉज इफ़ इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि प्रिपरेशन के लिए आपको बॉडी को थोड़ा एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए होगा, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए होंगे ताकि वो उस तरीके से एक्ट कर पाए. इसका दिन बिकॉज वी हैड प्लान्ड इट अर्लियर इन द डे, मेडिटेशन करके फिर हमने प्लानिंग करी थी. इट वेंट एज एक्सपेक्टेड, एवरीथिंग इज़ राइट ऑन टाइम. थोड़ी सी कोडिंग अभी करनी है, which we have a lot of time for. अभी 11 बज रहा है, 2 बजे तक ऑफिस है. we'll try to take out some time to do the coding part as well, or I'll see you in the next one. I don't have anything else to say. Take care, stay strong and keep working hard. I say it every day just because working hard is not easy. Not everyone works hard, so try to bring that thing into your routine and that will definitely help. Let's go.